box once. Yes. Hi. Just 2 minutes, guys. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Within 2 minutes, we'll start our class. Okay. How was today's exam? Kannada exam tana? ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರಿ? Is there any announcement from the school end or when they will going to start 12th syllabus? Hmm? Okay, actually, you people are logging with the 2 accounts, right? Here it is showing 2 accounts from Chitradurga. No problem. Yes, it is done. Hey, JNV Bellari, how are you all? Yes, fine. Okay, today I think I'm audible to all of you, right? Guys, I'm unable to open my camera just because I don't have enough power here. Power issue bahut hai. Don't know how long I will take the class. Maximum I will teach. Okay. And one more team came today. Ballari Chitradurga itself. Okay. YouTube. Yes, hi once again. Okay, guys, we'll start our today's session. Okay, actually yesterday we started with the gravitation. I given a good basics also regarding about the gravitation, and today also we are going to learn about one more topic, that is gravitational field. Gravitational field. इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. Okay. Okay, then it's fine. Before starting this exact concept, guys, today we are going to deal with a few good numericals. Okay, these numericals which I'm going to solve today, क्या है ना, numericals. Okay, these are very important for the, I told you 12th standard में एक chapter आता है electrostatics, where you can easily crack or easily solve the problems if you know the concept of gravitation. This one, gravitational field. If you know gravitational field here properly, then you can easily crack all the questions which will become under the electrostatic numericals. Okay, before starting exact concept, let us take a quick recall what we discussed in our previous class. Okay, in previous class we discussed about the Newton's law of gravitation. Correct now? Actually, Newton's law of gravitation, what it told, actually, if two masses are there, m1 and m2, called as an A and B, if they are separated by a small distance r, means इन दोनों को बीच में एक force होता है. क्या होता है? Force. Mainly it is an attractive force. Correct now? Mainly it is an attractive force. Just a minute. इसको भी. Okay. These two are attractive forces. Okay.
And this force can be we derived one force equation for the Newton's law of gravitation, that is F is equal to G m1 m2 by r square. Correct now? Here the value of G is there, no? This is we called universal gravitational constant. G को क्या कहते हैं हम? Universal gravitational constant. Wherever you go, the constant value will be same only. What is that value? 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. Guys, listen. This is the value you need to know at any cost. Okay, and how to derive this SI unit also I told you yesterday. Keep that remaining and keep that one in mind. And how to derive the dimensional formula for the G also I told you. Clear enough? Similar way, guys, they are asking here. There are two masses are there. Mass will not positive and negative. Mass will be mass only. But in electrostatics क्या होता है? Positive charge आता है, negative charge आता है. इसको represent करने के लिए Q use करते हैं, plus Q minus Q. Okay, if you write the equation for force here means it will come K Q1 Q2 by R square होता है. इधर K represents electrostatic force constant. K represents, write down this one, electrostatic force constant. Okay, इसका वैल्यू होता है लगभग अराउंड 9 into 10 to the power of 9. सेम होता है, कुछ भी नहीं चेंज होता है. इधर देखो फोर्स है मींस न्यूटन एंड अगेन आर विल बी मल्टीप्लाइड मींस मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर केजी स्क्वायर था ना. दिस केजी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एक्चुअली हियर Q1 and Q2. Q is charge. ऑलरेडी आपको पता है Q means चार्ज. चार्ज के लिए SI यूनिट क्या होता है? कूलम. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना कूलम, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. कूलम कूलम 2 कूलम है, दैट्स व्हाई हियर कूलम स्क्वायर. सेम ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर था, इधर कूलम स्क्वायर हो गया. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्लेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर है ना अब तक? And then next concept क्या था? What we discussed yesterday, a properties of gravitational force. First one क्या था? Always it is an attractive force. It is always be attractive force. But in electric and as well as magnetic field क्या होता है? Sometimes attractive, sometimes repulsive force will be exist. And second point है, it is independent of the medium. Medium means मान लो ये दो masses है, ये दोनों को बीच में force exist होता है ना, gravitational force. It will be same whether you are going to keep this one in the air or water or oil, wherever, or else you keep these two objects in a vacuum. Okay, this force of attraction between two particles will be same everywhere. That is what here it is saying, independent of the medium. But if you keep the electric charges, that will be change होता है. Okay, उधर पढ़ते हैं, कोई problem नहीं. It holds good over a wide range distance. Wide range distance मैंने yesterday एक्सप्लेन किया था. वाइड रेंज डिस्टेंस क्या होता है? इधर मान लो सन एंड एज वेल एज द अर्थ. ओके, दिस एक्चुअली दिस ला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, राइट? बट मास एंड एज इफ यू वांट टू कंसीडर अर्थ एंड एज वेल एज सन, दे आर वेरी बिग masses, but their distance है ना, it will be very large. Okay, at that condition we can treat this earth and as well as the sun as an point object. ठीक है ना? Good. Next one, it's a central force. Central force means this is the one object, this is another object. The force of attraction will be exist between two objects along the line joining points of the two masses from their center. From their center only we are going to measure the distance. ये R value को measure करते हैं ना, center से measure करते हैं. Okay, and then fifth one also I explained, principle of superposition. Oh, today I will explain in brief. Okay, no worries. This is all about what we discussed in previous class. I given a brief idea about it. Let me know in a chat box, is everything what we discussed in a previous class is understood, right? I need confirmation, guys. Yes, I got today. Janvi Chitradurga, Prasanna, hi, and Mandya, Davangere school students also came today. Great, guys. Is it possible to give a reply in a chat box once? Yes. That's great. Actually, in yesterday class, only Chitradurga present. No, that's why their response given a response. कोई problem नहीं.
Okay, we'll move to. Okay, if you know these all things means I have a small questions, guys. The question says here, the mass of a moon is about 1.2% of the mass of the earth. सुनो, ध्यान से सुनो. Mass of the moon is 1.2% of the mass of the earth. है ना? आप ही आंसर देना है इधर. Compared to gravitational force, the earth exert on the moon, the gravitational force on the moon exert on the earth. Which is the correct answer among this one? Hey. Great, great. I don't know. Either some message box भी दिख रहा है क्या आपको? Message box ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ why it is happening? Cool. I got answer from one school. I'm expecting from other also. Hey, Prasanna, good. Next. Yes, correct. Most of you all given a correct answer only. That is same. Force will be exerted between the two objects will be always similar. No changes. That's great. Okay, today we'll start about one concept. That is the central force. Central force था ना अभी भी. Central force क्या होता है? Between the distance from where we'll take from two objects का center से लेता है. Okay, उसी concept है central force. देखो क्या होता है. मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दिख रहा है ना? ये दो ऑब्जेक्ट का मास में एक का ऑब्जेक्ट का मास है m, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना बड़ा वाला ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन विल बी 2m. ओके फाइन. एंड देन दिस छोटा वाला मास है ना उसका लेंथ है l, एंड बड़ा वाला मास है ना इसका लेंथ है 2 times the l. 2 times the l. If I'm going to ask you guys what is the force of attraction between these two particles means, how you will going to calculate? मान लो ये दोनों को बीच में इधर सुन, from this center to this point, up to this point only, the distance will be l by 2 है. कितना है distance? l by 2. Now let me know guys, what is the central force or force of equation for the gravity between these two objects? How you will write? Generally what we will do know, g small m छोटा मास, बड़ा मास means 2m, m1 m2 है ना. ओके ठीक है. जो those who don't know, I will write from first point itself. It is better. Correct ना? जनरल इक्वेशन था हे क्या हो गया? हाँ yes. जनरल इक्वेशन था g m1 m2 by r square. इधर m1 m2 represents mass of the two objects, r represents distance between the two objects. How you will write? g m1 means small m into m2 means that is a second object 2m है ना इधर, इसको लेते हैं, divided by r square means distance from this center body to this center body कितना है? l by 2. l by 2 का whole square. खेल खत्म, नाटक बंद. करेक्ट ना? if you write like this, no, this is will wrong. ये wrong होता है, ये wrong होता है. Do you know why guys? Why it is wrong? Can anybody text me in a chat box? Why it is wrong? So many of you will do like this only. l by 2 है distance between the two objects. l by 2 लिखने से correct होता है equation, like you people will thought. But इधर concept है central force, right? That's why we can't able to write like this. This is wrong. Okay, थोड़ा सा change करना पड़ता है. क्या है वो changes? हाँ, that's great. Correct bro. Okay, क्या करना है इधर? देखो इसका सेंटर इधर है, ये पूरा लेंथ l था, करेक्ट ना? अप टू दिस पॉइंट डिस्टेंस क्या होता है? l by 2 होता है, करेक्ट ना? सिमिलरली ये पूरा का लेंथ कितना है?
2 L है, देन इसका सेंटर किधर होता है, आधा में होता है, मीन्स L में होता है, अप टू दिस पॉइंट इट इज L, right? Then central force will be act along in this direction. This is the central force. Did you got? Right? मजा आ रहा है ना? Yes, देखो. Now the distance क्या है इधर? This is what the distance we need to calculate. R replace करना है ना? From this point A to B. जिसको A B है ना? This is the distance of R. Right? We need to calculate this value. कैसे calculate करता है? I'm going to write this in a downward direction. देखो A to B है इधर, और एक C लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये डिस्टेंस पता है हमको, A to C, right? A to C, what is the distance? L/2. L/2 है, थोड़ा डायमेंशन अलग है, ट्राई कर लो. ओके कोई बात नहीं. एंड देन C to B मीन्स C to B तक हमको डिस्टेंस पता नहीं है, C to B, बट फ्रॉम B to दिस बॉटम ऑफ द एड्ज है ना, इधर तक लेंथ पता है हमको, L है. C तक मीन्स क्या होता है, L/2 होता है. दिस इज L/2, दिख रहा है ना? आई विल चूज अनदर कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन रिमेनिंग दिस वन बिकम L/2. देन B to C क्या होता है, देखो. If I'm doing fast means let me know guys, I will slow down. L/2 होता है, ये दोनों साइड L/2 है. इट्स राइट एंगल ट्रायंगल के जैसे दिख रहा है ना. अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. राइट? इन दिस फिगर यू नीड टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. हमको चाहिए AB स्क्वायर, लिख दो. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स L/2 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स अगेन L/2 होल स्क्वायर. आंसर कितना आ गया, 2L/2 होल स्क्वायर मिल गया. मीन्स AB स्क्वायर का आंसर कितना मिल गया, 2 इंटू, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैंने, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आता है. 2 1 जा 2 2 जा. मीनवाइल AB स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, L स्क्वायर बाय 2. राइट? L स्क्वायर बाय 2 आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ R. R है ना? नहीं है, स्टिल इट इज नॉट आंसर ऑफ R बिकॉज AB स्क्वायर है. करेक्ट ना? इफ यू कीप दिस वन हियर R स्क्वायर मींस इट इज एनफ, नो प्रॉब्लम. R चाहिए मींस इधर I'm going to write once again guys. AB value will become square लेना है. If you take square means under root of L square divided by क्या होता है, देखो √2 होता है instead of 2. करेक्ट ना? Then square root cancel, L by √2 मिलता है. This is what AB. It is nothing but guys R. R का वैल्यू कितना मिल गया, इधर लिखना है. R का वैल्यू L by √2 मिल गया. Now substitute this value in this equation. कौन सा इक्वेशन में, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन फोर्स का, उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. देन फोर्स वैल्यू विल बी इक्वल टू G(m1) इंटू M2 वैल्यू कितना है, 2 times M, डोंट राइट M1, 2 times M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का वैल्यू कितना है, L by √2 whole square. This is what the final equation, that is central force. Central force का मीनिंग पता होगा ना, central force means between two objects, center, so center to center है ना distance, उसको ही लेना पड़ता है आपको. Why I am specifying these things means just because of the 12th standard first chapter. Clear है ना? Hope it is clear. Quickly let me know in a chat box if it is clear. Means I'm expecting the answer yes from everyone, those who are in our online class. We have not considered that. Yes bro, yes, right. What about Ballari guys, they're not there. No problem. मजा आ गया ना? Okay, that's great.
ठीक है, we'll move to the next concept. We'll move. Hope you all are note down this equations, right? I will move to the next concept. Normal reaction of a block. Okay, now we got an equation for same for this one. What is the answer? देखो इधर g m m g 2m divided by, लिख दो इधर 2 times g m m है ना, m square I will write divided by इसको क्या लिखता है L square, अंडर रूट स्क्वायर जाता है तो 2 आता है इधर. इफ इट इज कम्स टू न्यूमरेटर मींस 2 इधर मल्टीप्लाई होता है ना, करेक्ट ना, 2 इधर मल्टीप्लाई होता है. इट इज नथिंग बट सिंपली वी कैन से दिस वन एज एन 4 times the gm square by L square. Keep this one in your mind or write down somewhere. This is a central force between these two blocks. Okay, यही ब्लॉक के ऊपर guys I'm going to find out the normal reaction. Normal reaction कैसे होता है? इधर देखो, those who don't know how to write the free body diagram, for them also it will be benefit in this class. Okay, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करना है? देखो इधर, दिस इज अ ब्लॉक, राइट. इसका मास कितना था? m था. इसका मास कितना था? 2 times the m. Actually basically these two masses guys are in rest. When they are in rest means there are two forces will be acting on them vertical direction. Two forces act होता है ना. One force is from the bottom of the body means attached contact से ऊपर in this direction, right? In this direction होता है normal force. This is a first object, that's why I will write normal one. In normal one है ना, ये एक ही force act हो रहा है means this body will become fly. एक ही force होता है means fly हो जाता है. इसको balance करने के लिए from the center of the object से डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स आ जाता है डाउनवर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके ठीक है. नेक्स्ट देखो इधर सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है. सेकंड ऑब्जेक्ट में सेम ऊपर वाला फोर्स क्या होता है? भगवान होता है. नॉर्मल फोर्स 2. उसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाला फोर्स कौन आता है? mg, बट इधर मास क्या है? 2 mg है. लिख दो इधर 2 times the mg. क्लियर ना? वर्टिकल फोर्सेस पता हो गया ना कौन कौन सा है? ओके. इफ यू meanwhile guys, if you get any doubt means text me in a chat box. Okay, I will try maximum my level best to solve your doubt. ठीक है ना? ओके देन नेक्स्ट, ये दो ही फोर्स होता है कूल. और एक फोर्स आता है ग्रेविटेशन में. व्हाट इज दैट? सेंट्रल फोर्स. उसको भी लिखना है नाउ. सेंट्रल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मासिव सेंटर्स मींस इन दिस डायरेक्शन इट विल बी एग्जिस्ट, राइट, along this direction. But this is the first object, mass m1 acts the force on second object. This is second object acts the force on first object. ये प्रोसेस है, करेक्ट ना? मीन्स इन दिस डायरेक्शन एक फोर्स होता है, इन दिस डायरेक्शन और एक फोर्स होता है, करेक्ट ना? आई विल कॉल दिस वन फोर्स 1, दिस इज अ फोर्स 2. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. कूल. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली नॉर्मल फोर्स. इधर लिखा है ना नॉर्मल फोर्स को निकालना पड़ता है. नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ता है मीन्स we need to calculate how many forces are acting on this body. That is what we call FBD. No, free body diagram means simple है. एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको देख के लिखना पड़ता है. That is known as the free body diagram. क्लियर है ना? Now नॉर्मल फोर्स के लिए होता है एक बॉडी के लिए, बॉडी फर्स्ट के लिए N1 है, mg है, दो फोर्सेस है. उसके साथ साथ इधर F1 भी है. F1 actually it is not in the direction of x-axis also, not in the direction of y-axis also. That's why we need to resolve this force along x-axis in this direction and also along in this direction also.
ये दोनों एक्सिस के तरफ रिजॉल्व करना पड़ता है, किसको? F1 को। क्लियर है ना? Similarly, F2 also not in x axis, not in y axis. Hence, we need to resolve the F2 along in x axis and as well as along in y axis. Along the x axis, this is the theta, guys. From the axis, it is making theta. Then F1 can be written as here F1 cos theta. Either in vertical direction, F1 sin theta होता है. Clear ना? In second body में आता है. Second body में इधर है angle theta. Then it will become F2 cos theta. Vertical direction F2 sin theta. Clear है ना? Now we write all the forces. ये F1 cos theta, F2 cos theta है ना, equal है opposite direction में. Hence these two forces will become cancel. No worries. Cancel हो जाता है. क्या हो जाता है गाइस? कैंसिल हो जाता है ये दोनों. क्लियर है ना? रिमेनिंग थिंग क्या है? बॉडी F1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है लिख दो. ये बॉडी 1 के ऊपर अप साइड कितना फोर्स लग रहा है? N1 है, प्लस उसके साथ साथ इन द सेम डायरेक्शन F1 sin थीटा है. कूल. एंड देन that's it, no? Yeah. And then in downward direction opposite direction में क्या है? minus mg है. Acceleration नहीं हो रहा है, that's why it is 0. Guys, do you know how I write this equation? If you don't know means I will explain this one also in a basic से explain करता हूँ. क्योंकि ना next year guys, if you don't know how to write free body diagram and if you don't know the vector means बहुत मुश्किल होता है. Okay, while writing the free body diagram, you need to write F is equal to m into a. Correct now? Now the body is not accelerating. Correct now? Body is not accelerating. Then a value will become 0. If a value will become 0 means this will become 0. कोई problem नहीं. Correct now? Then we need to write here F है ना? F net है. Net force acting on a body. सारे के सारे force को इधर लिखना पड़ता है. Correct ना? इधर upward forces कौन सा था? टू फोर्सेस था, N1 and then F1 sin theta. डाउनवर्ड फोर्स था mg. ये ऑपोजिट है, that's why I write it like this. N1 plus F1 sin theta minus mg. ये सारी के सारी क्या है? फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी. क्लियर है ना? एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है? एक्सेलरेशन था. एक्सेलरेशन क्या है? 0 हो गया ना, इसलिए 0. करेक्ट. देन एक्चुअली वी नीड टू रिसीव द वैल्यू ऑफ n1. n1 क्या होता है? ये दोनों चीजों को राइट हैंड साइड को लेके आ जाना. n1 इज इक्वल टू, ओके फर्स्ट विल राइट mg. ये प्लस होता है ना, दैट्स व्हाई. सॉरी. ओके, mg माइनस f1 sin theta. करेक्ट ना? दिस इज व्हाट द normal force, right? In a similar way, I will give you homework for the second object. A second object के लिए लिखना पड़ता है. क्लियर ना? होमवर्क क्या है पता हो गया ना? एंड मोर ओवर ये F1 के जगह में क्या लिखना है? F1 एक्चुअली वी डिराइव नो लास्ट पेज में F वैल्यू 4gm square divided by L square, right? You need to keep this value in this place, right? This is all about the normal reaction of the two block. Clear? एक बॉडी के ऊपर मैंने बोल दिया, दूसरा को आप ही करना है. Is it okay, right? Let me know in a chat box. Let me know in a chat box, guys. Or else if you want this, I will derive that one also. Is it okay? Yes, that's great. That's great. Okay, do it for the second one. Okay, simple है. N2 है, नीचे क्या हो रहा है? ये 2mg है, F2 sin theta है.
F के प्लेस में रिप्लेस करना है 4gm²/L²। ये कहाँ से आ गया? दिस इज सेंट्रल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ओके, सेंट्रल फोर्स। That's it. And yeah, we'll come to the next concept, that is principle of superposition. This is also come under the electrostatics. Electrostatics में ये concept भी आता है. Okay, that's why. मान लो इधर this is a first mass of mass m1, this is a second mass of mass m2, this is the third mass of mass m3. Like this, in one system, if you're going to consider means n number of systems होता है, I'm going to considering this red color है ना, वो मास को nth मास I will consider. कौन सा मास है गाइस? ये nth मास है. ओके, मान लो फर्स्ट मास से, दिस मास है ना, ये फर्स्ट मास से nth मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एंड देन सेकेंड मास से ये nth मास पर कितना फोर्स लग रहा है, एंड थर्ड मास से nth मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. इसको कैलकुलेट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन, लिख दो इधर, फोर्स ऑन nth पार्टिकल फ्रॉम ईच masses m1 m2 m3 सो on. कितना मासेस होता है ना, वो सभी के मास के उसके वजह से ये mn पार्टिकल है ना, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करना है हमको. इसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग वन इक्वेशन और वी आर यूजिंग वन टेक्निक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ भी नहीं है. वी नीड टू ऐड ऑल दी फोर्सेस, we need to add all the forces which are acting on the nth particle. वो nth पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको ऐड करके लिखना है. दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, देखो इधर m1 के वजह से क्या होता है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट से फोर्स लगता है इन दिस डायरेक्शन में. आई विल राइट दिस वन एज f. दिस इज nth particle. That's why force on nth particle from m1 particle, subscript, these two are subscript. Okay, I will write in a short way, it is better. अच्छा से समझ में आता है ना, इसलिए. Yeah, force on nth particle due to first particle. Clear है ना? Now similarly mass m2 से भी act होता है ना, that is what we are going to call, like in this direction. In this direction होता है force. This is force on mnth particle due to second particle, right? Next third one है ना, third one का coincide होता है, problem नहीं. देखो एक बार, in this direction में होता है, this is we called force of mnth particle from m3 particle. Clear ना? This all the net force add करना है. अभी now we need to add net force acting on this nth particle. इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ना, उसको हम लिखते हैं net force acting on nth particle will be given by, first one क्या है, force on mn due to m1 particle plus force on mnth particle due to m2 particle plus force on mnth particle due to m3 particle. This is we called principle of superposition. इसको हम क्या कहते हैं guys? Principle of superposition कहते हैं. Clear? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. Understood right? एक बार चार्ट बॉक्स में लिखो ना. If you know, if you understood this one means we'll solve good problems. Yes, that's great. That's great. Okay, we'll solve good questions based on this one. Okay, then you will get a clear idea about it. Okay, come to the point. Yeah, this is the question actually. ये क्वेश्चन क्या है ना, इधर 3 मासेस है
आई एम गोइंग टू कॉल m, इसको हम बोलते हैं 2m। क्या है ये? 2m है। यस 2m है। What we need to calculate? No, we need to calculate the force. सुनो, force acting on m and 2m। m के ऊपर ये दोनों का एक होता है, दो ये भी m है ये भी m है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये दोनों में एक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन है 2m के ऊपर कैलकुलेट करना है। मालूम हुआ ना क्या बोल रहा हूँ मैं? or else they might be asked the question like this. Okay, force on m will be x g m square divided by, मान लो ये साइड है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ पार्टिकल विल बी ये है। व्हाट इज दैट? ये ईच साइड विल बी ये, राइट। इधर क्या होता है? ये स्क्वायर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू को फाइंड कर लो। नाउ दिस इज ऑन मास m, नो। सिमिलरली मास ऑन 2m, फोर्स ऑन 2m इज इक्वल टू y g, okay, 2g m square by a square. Find the value of y, find the value of y। कैसे कैलकुलेट करता है? इधर x और y का वैल्यू निकलना है। Okay, I will solve one question. First one I will solve. You have to solve the second one. ठीक है ना? Right? What I'm saying? You will make one deal with us. Okay? First part I will solve. मैंने solve कर दूंगा, आपको second part को solve करना पड़ता है। ठीक है ना? I will show how to solve the first one. Let me know. In the chart. ओके, सुनो इधर, सुनो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलता हूँ मैंने। एक्चुअली हमको पता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नो मास m के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है कैलकुलेट करना पड़ता है। एक फोर्स एक्ट करता है 2m के वजह से, विल कॉल दिस वन एज f1, एंड दूसरा फोर्स एक्ट करता है m के वजह से, आई एम गोइंग टू कॉल दिस वन एज एन f2। दिस इज f1, दिस इज f2। अरे यार f1 तो इधर है, f2 तो इधर है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाउ एंगल बिटवीन दिस टू विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल है गाइस। दिस इज 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री है। ओके, इट इज कूल। एंड देन नेक्स्ट क्या करना है हमको? ओके, दिस इज 60 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज आल्सो बिकम 60 डिग्री। नेट फोर्स किधर लगता है? वेक्टर पता है ना आपको? वेक्टर 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 परपेंडिकुलर वेक्टर होता तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर आता है। रिजल्टेंट वैल्यू विल राइट हियर, दिस इज a, दिस इज b, मींस यू विल राइट लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बट इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर वन आल्सो। 60 डिग्री है, ऐसा है, ऐसा है, करेक्ट ना? दिस इज b, दिस इज a। हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन? वेक्टर में ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का बीच में आता है डायगोनली। पैरेललोग्राम वी कैन यूज हियर, सॉरी दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर मींस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको 2ab होता है। इन अ सिमिलर वे वी नीड टू अप्लाई हियर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। किसको अप्लाई करना है इधर? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इधर मैंने ले लिया a एंड b एज एन वेक्टर, बट इधर वेक्टर कौन सा है? टू फोर्सेस आर एक्टिंग, नो? देखो, श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखो इधर, देखो इधर, डेफिनेटली आई विल राइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट फोर्स, या दिस इज द फर्स्ट फोर्स, दिस इज द टू फोर्स, सेकंड फोर्स। इन दोनों का बीच में कितना है? 60 डिग्री है। Hence we can apply here law of parallelogram। इसका इन दोनों का होता है ना नेट फोर्स, इन दिस डायरेक्शन में होता है नेट फोर्स।
करेक्ट ना. Hence net force can be written as under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. 2F1 F2 cos theta होता है. ठीक है, देखो इधर F1 square means actually the force which is acted by the first mass m है ना, इसके वजह से हो रहा है. एक m1 के वजह से हो रहा है. F2 फोर्स है ना, वो इधर चेंज कर दिया मैंने. सॉरी 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 फॉर दिस वन. जस्ट अ मिनट, आई विल गिव द कंक्लूजन. यस, इसके ऊपर गाइस फर्स्ट फोर्स विल बी एक्टेड बाय मास m, सेकंड फोर्स विल बी एक्टेड बाय m2. कोई प्रॉब्लम नहीं. F1 m2. ओके, F1 का आंसर एक ही मास है, सिंगल मास है इधर. दैट्स व्हाई द फोर्स विल बी F. जनरली आई विल टेक F एज एन फोर्स. ओके, F स्क्वायर होता है. F2 का वैल्यू कितना होता है? फोर्स विल बी डबल होता है ना, मास डबल है. दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर 2F का स्क्वायर प्लस 2 F1 means F1 itself, F2 means 2 times the F into cos थीटा कितना है गाइस? 60 डिग्री है. 60 डिग्री है ना, cool. Then it's fine. Under root of this is F square plus 2F square means 4F square होता है. And then इधर 2 से इधर cos 60 means इसका वैल्यू 1/2 होता है. करेक्ट ना, 2 से 2 मर गया. ओके, देन रिमेनिंग विल बी 2F square means plus 2F square. कितना बन गया इधर F square? देखो 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, under root of 7F square. F square and root will be cancelled, no? Then the net force answer आता है √7 into F. कितना मिल गया हमको? √7 into F. क्या मिल गया? नेट फोर्स मिल गया. करेक्ट ना. नाउ we need to calculate the value of force acting on this object. मास के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? पहला वाला बोल दिया था ना मैंने. ओके, इन दोनों के बीच में मास कितना एक्ट करता है? देखो एक बार, पहला वाला दूसरा वाला 2m है. सॉरी 2m के वजह से F 2m will be equal to ये कितना आता है देखो, y into 2 लिख दिया क्या मैंने? गलत किया था, चेक करते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं. g पहला मास था m, दूसरा मास था 2m. करेक्ट ना, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में कितना था डिस्टेंस? ये स्क्वायर था. राइट व्हाट आई एम सेइंग. जस्ट अ मिनट गाइस, इज देयर एनीथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग? मुझे थोड़ा गलत समझ रहा है. जस्ट अ मिनट इन दिस सिचुएशन. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, या इधर देखो कितना मिल गया हमको आंसर? √7 into F. F का क्या वैल्यू क्या होता है 2m के लिए? यही है इक्वेशन. लिख दो इधर, अंडर रूट ऑफ 7. F मीन्स ऑलरेडी वी नो 2, y के रिप्लेस में अंडर रूट ऑफ 7 आ गया है. ओके, g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर. करेक्ट है ना? देखो एक बार, मेरी मिस्टेक है जी. यस, एवरीथिंग इज करेक्ट ओनली. गाइस देखो इधर रिप्लेस क्या हो गया? y is replaced by √7. y is replaced by √7. then answer will be for y will be √7 होता है. करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम. √7 क्लियर है ना? सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x आल्सो. ट्राई कर लो. ओके, ट्राई कर लो एक बार, सिंपल है. ऑन द मास नाउ, एक्चुअली ऑन मास m हमको कैलकुलेट कर दिया मैंने.
सेकेंड मास है 2m, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट्स इट क्लियर। थोड़ा लेंथी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ना? विल मूव फर्दर। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट मास। ओके, सेम ही है, आगे 2 मास के ऊपर कैलकुलेट। ओके, और एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन, इफ यू नो दिस क्वेश्चन नो, देन यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। ओके, देखो इधर एक बड़ा सा मास है, उसका मास है m, उसका लेंथ है टोटल l। क्या है? ये पूरा रॉड है ना, उसका लेंथ क्या है? l है, उसका मास कैपिटल है। इधर एक छोटा सा मास है, उसका मास है m। एक्चुअली दिस मास इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ ये, कितना डिस्टेंस पे रखा है? ये डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, now they are asking what is the gravitational force exert between them. What is the gravitational force exert between them? Let me know in a chat box what will be the gravitational force. देखो एक बार 2 मिनट टाइम ले लो, कैलकुलेट कर लो क्या होता है। अरे यार, ओके, आई विल एक्सप्लेन once again I will explain that one. सुन, देखो इधर ये मास m था, ये मास भी m है, दोनों क्वेश्चन प्रूव करते हैं आज। ओके, दिस मास इज 2m, they given like this f m। ओके, फोर्स ऑन मास m, ये मास और ये मास, ये दोनों पे एक ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? x ಇಂಟು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಸ್, x ಇಂಟು g m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಸ್ m ಅಂಡ್ m. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ f on 2m. Force acting on a second mass will be equal to y 2 times the gm square by a square. This is the force acting on the mass 2m. The 2m mass ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು force act ಆಗ್ತದೆ. Then what will be the value of x, what will be the value of y, we need to calculate. This is what they are asking. x and y value calculate करनी है. That's it. Find x and y both there. Okay, between these two body mass there is a distance we called a. Here also a, and this side also a. This is the sides of a masses, or distance between a two masses each. Clear enough? This is a equilateral triangle and angle between them will be 60 degree at any point. At any point angle will be 60 degree. मान लो. Oh, now I will take body second one. Hey body, this body I will take. Okay, on this body mass 2m है ना, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है m से और am से. करेक्ट है ना? राइट? ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. राइट? yes, okay. now on this body 2m है ना, इसके ऊपर इधर ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. we need to find out the force which is acting on the body 2m. right?
Either already they given force acting on a body 2m is equal to y into 2m gm square by a square. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ F is equal to G m1 m2 divided by a square or else r square. Will come from the basic itself, no problem. Correct na? R square का basic formula. देखो इधर G m1 means first object will be this one, which is acting a force on this object. Correct na? That is m1. Second object क्या है इधर? हाँ, the first object mass है. Second object mass क्या है इधर? This one also acting the force on this object, that is m2. उसका mass भी m है, divided by r square. Correct now? Then this equation will become G m into m means m square by r square is nothing but separation distance. A square होता ना? One second, one small mistake मार दें इसके लगे. One second, be in line. Correct. Okay, net force which is acting on here 2m we are find out correct है, कोई problem नहीं. This is the force on 2m हो गया. Correct ना? ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2m ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದಾಗ ಈ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ F1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ F2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 degree will be the angle between these two forces. But we need to calculate the net force. Net force calculate ಮಾಡಬೇಕು, right? Net force direction ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? In this direction. This is the net force direction. Net force direction ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು we need to calculate by this one by using the law of parallelogram. Law of parallelogram. If you're not understanding this one means you can't able to solve any one question in electrostatics. Okay, understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Law of parallelogram ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ r is equal to, you know, right, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. By using this formula we will find out the resultant vector. This is the resultant vector here, f net. Okay, now f net ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ look at here, f net will be equal to under root of, instead of a इधर f1 ले लो, f1 square, second one will be f2 square plus a and again f1 2f1 f2 cos theta कितना है? 60 degree, right? Up to this point is understood, right? Let me know, is it understood? Good. Then actually ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ 2 ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಮಾಸ್ 2m ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಸ್ m ಇಂದ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಸಸ್ f1 is equal to f2 होता है. That's why I'm treating this one as an generally f itself. f ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here now I'm going to replace that one here. If I treat that one as an f means here क्या हो रहा है? Under root of f1 square means f square plus f2 square means f square plus 2 f1 f2 f square होता है into cos 60. Cos 60 is nothing but 1 by 2. 1 by 2. This 2 cancel now, right? This 2 will be get cancelled. Then remaining will be f square plus f square plus f square. Then it will become under root of 3f square, right? Here f square and root will be cancelled. Then remaining thing will be root 3 into f हो गया.
रूट 3 इंटू एफ, क्लियर है ना, रूट 3 इंटू एफ बन गया। देखो एफ मीन्स हमको पता है, तो कौन सा मास ले लिया हम, 2 और 1, which one, this one, F21, right? Yes. Okay, actually we took here, guys, this is not why, sorry, इधर देखो, इधर देखो, actually इधर we took force acting on mass 2 by the m1 and m2, these two masses we took, correct ना, these two masses, right? Meanwhile इधर these two masses means इधर x होता है, इधर m square, 2m आता तो इधर 2m square आता, सॉरी फॉर दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेट फोर्स क्या आता है इधर, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एफ है, एफ मीन्स लिख लो इधर, अरे यार हाँ, एफ मीन्स क्या होता है इधर, अंडर रूट 3, एफ मीन्स जनरल इक्वेशन जी m1 m2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट, जी m1 m2 बाय ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है, आंसर आता है हमको, ओके। अंडर रूट 2 जी है इधर, m1 का वैल्यू m है, m2 का वैल्यू है सेकेंड ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मिनट, इट इज कमिंग स्लोली, it is coming slowly, it is not working here, I don't know, in this corner, okay है ना, इस कॉर्नर वर्क नहीं हो रहा है, कॉर्नर के लिए क्या हो गया, guys I'm writing this one in the next slide, स्लाइड भी नहीं चेंज हो रहा है, क्या हो गया इधर, स्लाइड इज नॉट चेंजिंग इवन, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, हेलो, बहुत स्टक हो रहा है, ओके गाइस, नाउ यू कीप दिस वैल्यूज, m1 क्या है m, and m2 क्या है m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ओके, दिस इज विल बिकम g m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस इज 3, ओके, अंडर रूट 3 मिल गया किसको, तो क्या हो गया सर, ये बहुत सारी चीज को, गाइस आई डोंट नो, माय स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, क्या हो गया, गाइस ये रूट 3 है, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x होता है, x का वैल्यू इधर निकल जाता है, देखो इधर जी m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया ना, रूट 3 इज रिप्लेस्ड बाय x, ओके, ऐसे कैलकुलेट करता है, दैट्स इट, एक्चुअली दिस इज द जेई क्वेश्चन, आई डायरेक्टली तो का जेई क्वेश्चन, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से हम और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, और एक बार प्रैक्टिस कर लो इसको, और एक दो बार, okay, and meanwhile if you're getting still trouble means tomorrow I will solve again this one and I will give you a brief idea about this, clear, let me know in the chat box, is it clear, आज तो बहुत परेशान कर दिया है स्क्रीन मेरा, okay guys, this is all about today's class, okay, still you are not able to understand means I will unmute you all, you can talk with me and I will try to clear this problem, okay, I'm unmuting you all, you can talk also, unmute yourself if you had any doubt means I will clear your doubts. If it is clear means then we'll wind up this session and we'll join tomorrow. Okay.
Tomorrow I will give another few ideas how to solve the problems. A mass per unit length, how to take, and how to solve the point mass forces and everything. Yes, bro. Yes, guys. Okay. Well done. Okay. Yeah, we'll meet tomorrow. Until then, take care. Bye bye. Bye, sir. Actually, I unmuted, bro. They're talking. I don't.